हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube सेशन में। और ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है हमारे आकाश एडू टीवी के टीम से के द्वारा। और ये जो क्लासेस होती हैं टीवी पे, ये आपको मिलेंगे। आकाश की जो क्लासेस हैं वो एयरटेल DTH में मिलेंगी, जिसमें हमारी जो चैनल नंबर्स होती हैं वो थे 467 और 478। और साथ ही ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस अवेलेबल हैं JioTV ऐप में भी। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है ऐप को, एंड यू कैन व्यू द क्लासेस। तो हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, जैसे आपने देखा होगा कि वी विल बी वर्किंग ऑन द शॉर्टकट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शॉर्टकट्स की ये एक सीरीज ऑफ क्लासेस चल रही हैं। तो आज भी हम लोग एक छोटे टॉपिक को कंसिडर करते हैं जिसमें हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन कॉर्ड की बिटवीन द टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल्स होते हैं तो उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट उसमें कोई शॉर्टकट्स अगर यूज़ होते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, वो हमें देखना है। तो अभी बात करते हैं कॉर्ड की बेटा। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉर्ड। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी भी सर्कल को कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है ये। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। दिस इज AB, दिस इज द कॉर्ड वी हैव, राइट। जनरली ये होता है, द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। बट अगर दो सर्कल्स हैं हमारे पास, इफ यू हैव टू सर्कल्स, और ये दो सर्कल्स को हम ऐसे कंसीडर करते हैं मान लीजिए, और हमें एक कॉर्ड चाहिए, तो कैसे हमारे लिए कॉमन कॉर्ड है। तो ये जो पार्ट है, दो दो जो सर्कल्स हैं इसके बीच में कॉमन कॉर्ड्स की अगर बात करें, दिस इज द कॉमन कॉर्ड वी हैव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लो इस सर्कल को कंसीडर करता हूं, ठीक है, दो सर्कल मैंने कंसीडर किए, राइट। यहां पे ये सर्कल मेरा, दो सर्कल्स है यहाँ पे, एक तो ये दो सर्कल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आपने देखा यहाँ पे मैंने दो सर्कल्स ऐसे टच करते हुए निकाले, राइट। दिस इज हाउ वी डू इट। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉर्ड होगा ये होगा बेटा AB। सो दिस इज द कॉमन कॉर्ड वी हैव, राइट। और जब दो सर्कल टच करते हैं, इफ टू सर्कल टच ईच अदर, देन वी हैव अ टेंजेंट विच इज द कॉमन कॉर्ड वी हैव। इसे हम कॉमन कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कॉमन कॉर्ड कहते हैं। बट कॉमन कॉर्ड इस केस में क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है। तो ये दो केसेस आपके पास हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन कॉर्ड बिटवीन टू सर्कल्स, तो मैंने आपको ये बताया। फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। जेई में फिर से बताता हूं, जेई मेंस में सवाल पूछे गए हैं लास्ट हर साल लगभग। कॉमन कॉर्ड का एक सवाल कहीं ना कहीं से आपके पास आता है। ठीक है, सवाल। और साथ में जेई एडवांस में भी इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। अभी हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पे, उसके बाद हम सवालों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे कैसे इसमें होते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट केस को। उसमें देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालें। तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज द कॉमन कॉर्ड, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट टू सर्कल्स। जब दो सर्कल की बात करते हैं तो कॉमन कॉर्ड, अगर मान लो मेरे पास S1 इज इक्वल टू 0 है, वी हैव S2 इज इक्वल टू 0, फाइन, एंड वी हैव अ कॉर्ड हियर दैट इज AB। तो अगर मेरे पास AB है, सो AB इज द कॉमन कॉर्ड। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ AB है, इक्वेशन ऑफ AB वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास S1 माइनस S2 जो होता है ये हमेशा 0 होता है। सो वी हैव द टू सर्कल्स हियर, circle 1 circle 2, और S1 minus S2 is equal to 0 will give you the equation of AB, that is the common chord। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को निकालना है या फिर इनके डिस्टेंस को निकालना है, तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो हम ये निकाल सकते हैं। अगर मुझे कॉर्ड AB की लेंथ चाहिए बेटा, कॉर्ड AB की अगर मुझे लेंथ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, वो है हमारा AB। तो ये भी हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा भाई क्या है। दिस इज द लेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये लेंथ हम बात कर रहे हैं जो कॉर्ड AB की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक तो यहां पे होता क्या है, कॉर्ड ये होता है AB, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं।
इक्वेशन क्या होता है, दोनों सर्कल्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। और जो लेंथ होता है दैट AB, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड B निकालते हैं, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की बात की, राइट। इसी तरह से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। अभी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है, कोई शॉर्टकट, कोई स्पेसिफिक केस, सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव द टू सर्कल्स हियर, राइट। आप देखिए यहाँ पे ये मेरा सर्कल है ना, और ये आपके पास क्या है बेटा, A है और ये B है, AB, ठीक है ना, दिस इज A एंड दिस इज B, सो AB इज द, वी हैव द कॉमन कॉर्ड। जब आपके पास AB कॉमन कॉर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 निकालना है। तो ये पहला केस है बेटा, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट, ये आपका पहला केस है। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि आप जब भी इसको लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दो सर्कल के जो x स्क्वायर वाले पार्ट है, स्क्वायर वाले पार्ट है, डिग्री 2 वाले पार्ट है, दैट विल बी एलिमिनेटेड, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, राइट, तो वो गायब हो जाते हैं, दैट वैनिशेस। तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आती है जो कि इक्वेशन ऑफ AB होती है। सो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ AB, राइट, है ना, ये आता है आपके पास। इसी तरह से अगर हम दो पॉइंट्स निकालते हैं, यू कैन फाइंड टू पॉइंट्स हियर, द पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, पॉइंट A एंड पॉइंट B, so that means we have to find the length AB here. This is the length we have, okay, this is the length AB we can find, because A and B हम point of intersection निकाल लेते हैं और हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो उसका तरीका होता है निकालने का बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा हाउ द थिंग्स बीइंग डन। सबसे पहले दो सर्कल्स लेते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ AB। देन वी हैव टेकन दोस टू पॉइंट्स AB, और AB से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से हम लेंथ को निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, ये तो हो गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अभी क्या कोई शॉर्टकट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, जो जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स जेई मेंस में आपको ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो टेक्निक्स, ये जो ट्रिक्स है, ये जो एज अ होल कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी काम आता है और सवाल इससे काफ़ी बनते हैं। यू कैन जस्ट मेक इट राइट, आप करेक्ट कर सकते हैं इसको। तो कॉन्सेप्ट को एक बार हम समझते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग इसकी कि कोई शॉर्टकट है क्या। शॉर्टकट तो दो चीज़ों की बात करेंगे बेटा। शॉर्टकट की हम बात करते हैं, मान लो सो दो केसेस हैं, लेट्स टेक वन बाय, दो सिंपल केसेस हैं। एक तो अगर दो सर्कल्स आपके पास हैं, सर्कल जो हैं कुछ ऐसे हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वी हैव x माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दो सर्कल्स हैं बेटा, ठीक है। एंड वी हैव x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास है बेटा। और यहां पे क्या होता है, मान लो आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहां पे कि द केस वन वी हैव द रेडियस सेम, राइट, रेडियस इज सेम, वी हैव द रेडियस सेम, ओके, ये आपका रेडियस सेम है। नाउ अगर रेडियस सेम है तो ओके, इफ द रेडियस इज सेम दैट मीन्स विल गो विथ द डिस्टेंस। नाउ what will be the the length of the common chord. You see, the radius is same, the centers are different. We have. So if we talk about the formula here, the formula is going to be d is equal to 4c square minus of twice of a minus b whole square, right? This is what we have. So this is going to be the shortcut we have taken here. Can you see that? If we have a case like this, beta, right? Okay. Now this is the shortcut number one. If you have two circles and you have to find the length of the common chord, so this is the formula we have. Okay. Similarly, if we talk about another circle, say, let me talk about two circles, and both the circles are orthogonal circles, right? Both the circles are orthogonal circles. Suppose we have S1 is equal to 0, right? Then we have S2 is equal to 0. And both circles are orthogonal circles. What we have? We have orthogonal circles, right? Orthogonal circles. Orthogonal circles means we are talking about the tangents. We are talking about the tangents to the circles are
perpendicular to each other, are perpendicular to each other, right? So this is what we have. Now, what is the shortcut whenever you have two orthogonal circles, right? So that means I'm talking about somewhat like this, these are the two circles we have, okay? And both the circles are orthogonal. That means the tangents are perpendicular to each other at this common point of intersection, okay? C1 and C2. So this is the common points of intersection. This is the common point of intersection we have, that is P. Okay, this is how we write it. So that means if we take R1 is the radius of the circle S1 is equal to 0. We have R2, the radius of the circle S2 is equal to 0. S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. Now, if we talk about the distance or the length of the common chord, if we talk about the length of the common chord in this case, this is going to be twice of R1 into R2 divided by under root of R1 square plus R2 square. Okay. So why it is so? How we have, yeah. So this is how we do it, right? You see, you have been given D, that is 4c square minus twice of a minus b whole square. S1 is, it is the first case where you have the radius same. The second one is, we have been given two circles and they are the orthogonal circles. So I'm talking about the shortcuts now, right? We have initiated with the discussion. We have started with the discussion, okay, where we have given the definition of some, how you have that common chord. What is the common chord? That what we have discussed. Now we are coming out with the method. So initially we have started with the longer method, the first one, where S1 minus S2 is equal to 0. For any circle we can use. But when you talk about these two circles, आप देखो यहाँ पे दोनों चीजें आप देख रहे हो. यहाँ पे we have the radius same, and here we have the two circles which are orthogonal circles, right? So this is what we have. Now these are the two shortcuts. Now let's start with some problems which are, which have been asked in different exams, and how this concept being used, the common chord, the concept of common chord being used in different problems. Let's take one by one. Okay, fine. Now you see, we have the length. One thing is very interesting one. So length of the, this is an interesting property we have. The length of the common chord PQ of two circles is maximum when it is the diameter of the circle. Okay, so that means we are having a circle like this, right? This is a circle we have. Okay, now we have another circle which is, bisecting, right? Which is bisecting the circle. Like we have a diameter in this case. Can you see that? This is the largest chord we have, the maximum, right? The maximum part you can see here we have is maximum when it is the diameter of the smaller circle. Fine. So the length of the common chord PQ. So this is the length PQ we have, and so based on this concept, lot many questions being asked. Okay. So you can see here. So this is circle number 1. We have circle number 2, and we have taken this circle. We have, the chord PQ of common chord is the diameter. So this is always going to be the diameter of the smaller circle. So this is the largest one, the maximum one. The length of the common chord will be maximum. So basically, based on this concept, we will do problems now, right? We'll be doing problems based on this concept also. Now you see, let's talk about the problems now. Okay, let's take one by one. Let's understand, right? Okay, the first one. Now you see, we have the first one. The length of the common chord of the two circles, that is this circle, this circle. So first of all, whether these two circles are orthogonal or not, that we have to check. If it is okay, then we can directly apply the formula here, not a problem. And also, if you can just check with the radius is same or not, that also you have to check the radius same. So radius same, then we can use the direct formula, not a problem. If the things are not okay, both the shortcut formulas that we have applied is not applicable here. We have studied, which is not applicable here. So how to go about that part? So basically, students, what we have, this is the case, very simple one. Both the cases, the shortcuts being not applied here, it cannot be. So what we have to do, this is the circle number 1. This is the circle number 2 we have, right? So we talk about the
equation of the common chord. So the equation of the common chord is S1 minus S2 is equal to 0. This is the equation of the common chord. That means 2x plus 4x, this is 6x we have. 6y plus 2y. So this is going to be 8y, right? Then we have, this minus of minus, that is going to be plus 6. This is going to be how much? This is going to be 3x, right? Plus 4y plus 3 is equal to 0. This is how we can write it down. So this is basically the equation of the common chord we are talking about. Okay, 3x plus 4y plus 3 is equal to 0. So that means if we have these two circles, friends, just see the concept involved here. We are talking about A, we are talking about B in this case, right? So this is the part we are talking about, isn't it? Okay. Now we have found out the equation of AB in this case. So this is basically the equation of AB, right? This is the equation of AB. Now we have to go for this centers. Let me join this. This is how we can join it, right? This is C1 and this is C2. Fine. And let me take this as M, suppose. Okay. And if we talk about AB, AB is always going to be twice of AM. AB is always going to be twice of AM we have, right? This is how we can write it. Now C1. If we talk about C1 in this case, C1 is nothing but we have minus 1 and this is minus 3. We have C2, which is coming out to be how much? This is going to be, we have 2 comma 1, right? So these are the centers. Similarly, we can go for the radius, the first part, the radius one. The radius is what? Because we need the radius here. So we have 1 square plus, we have 3 square, right? And which is going to be root of 10. Okay, this is root of 10 we have. That is 1 square plus 3 square. This is the radius. So if we have the radius here, we can take the radius here. That is root of 10 in this case. Fine. And the center is also known to us. Okay. If the center is known to us, we can go for radius, that is R1 being given to you, right? This has been given to you, beta. Okay. Now, if R1 has been given to you, this is the R1, and you have this, we have to find AM in this case. Okay. So this length, now we have to go for this length. Now how to find CM? C1M can be found out using the perpendicular distance method. So how to find the perpendicular distance method? We can use this AX1 plus BY1, right? Plus C divided by under root of A square plus B square. Can you see that? Now after that, once you have found out C1AM, C1M means center we know. What is the center? Center is this. We know the equation of the line. We can use this formula. We get this line, right? So using Pythagoras theorem here, where? In the Pythagoras theorem in this case, we use A and this is M and this is C1, right? So we can use the Pythagoras theorem. तो यहाँ पे हम Pythagoras theorem को use करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? AM निकाल लेते हैं बेटा. We find AM. So once you have found AM, we get AB to be how much? Twice of AM beta. Right? Twice of AM. So this is how you can find it out. So basically the first option is the correct one. Right. So this is a direct application problem where we use the concept that is S1 minus S2 is equal to 0 form and we get the answer. Okay. Right. I hope this is clear to everyone. The steps being given to you, I've done the steps here. Step number 1, we have taken step number 2, right? Then we have step number 3 here. Okay. Then we have step number 4. Then we have step number 5. Then we come out with step number 6. So this is one type of problem based on the common chord. Now let us go to the next type of problem, right? Let's go to the next type of problem. Let's see how the different types of problems, as I told you, different types of problems being asked based on this concept. So this is one type of problem. तो ये एक तरह के problems होते हैं. उसके बाद हम next वाले पे चलते हैं बेटा. Suppose आप यहाँ पे देखो, the question is asked in a very different way, right? The angle with the common chord of the circle, that is x square plus y square minus 4x minus 4y is equal to 0 and x square plus y square is equal to 16. Substance at the origin is 45 degree, 90 degree, then we have 60 degree, we have none, right? So that means we are talking about something like this. This is how it goes. This is x,
right? This is x dash, this is y dash, okay? And this is the origin. So x square plus y square is equal to 16. This is going to be, this is something like that, isn't it? This is how it goes. Fine. Now you see, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये हुआ this is going to be 4,0, right? ये आपका 4,0 है. This is the circle number 1, circle number 2, right? This is what we have. Now let's go to the circle number 1. Now circle number 1 पे क्या है कि we have -4 minus 4y. So basically we have to go for the equation here. So when you talk about this equation, because this is going to be 4,0, so we have to check for this part also. So basically we have to go with this part. So this is the circle I am talking about, isn't it? This is the circle. Okay, if we take x is equal to 0, we get y4, y is equal to 0, we get x4, right? So this is also passing through the origin. This is the circle. And what is the common chord? What is the common chord? So this is the common chord we have, right? This is the common chord we are talking about. Now, if you see the question here, how the question being asked, the angle with the common chord, okay, this circle and this circle subtends at the center. So this is the common chord and this is subtending which angle? So it's very much visible that this is subtending a 90 degree, right? So second option is the correct one we have. Can you see that? Second option is the correct one. Okay, so it's a very simple one. We have just drawn the circle and they're asking the angle with the common chord जो है वो इन दोनों सर्कल के बीच में वो सबटेंड करता है at the center. तो वो एंगल क्या होता है? What is that angle? That what we have to find, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने सर्कल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास आया and we come out with the common chord and common chord is subtending. तो हमें पता है कि ये जो लॉजिक था ना हमारा कैसा था बेटा, ऐसा था कि भाई ठीक है, ऐसा कुछ होता था कि सेंटर पे हम सबटेंड करते थे, पता है ना आपको, एक पॉइंट होता था, रिमेंबर? तो ये एंगल्स सेंट्रल एंगल कहलाते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम ऐसे कुछ कोई एंगल हम ऐसे भी कहते थे कि भाई ठीक है, इस सर्कमफरेंस पे कोई एंगल सबटेंड होता है. तो बेसिकली दैट इज हाउ वी वर्क ऑन. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाता है बेटा, ठीक है. तो ये एक तरह का सवाल होता है, एक तरह का प्रॉब्लम्स होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं. इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, हाउ थिंग्स बीइंग डन. क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है आप देखो, the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 bisects the circumference of the circle, that is x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equal to 0. Then we have to prove that 2g dash into g minus g dash plus 2f dash into f minus f dash is equal to c minus c dash. So this is what we have to do it, right? तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व. अब देखें यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए मैं छोटे सर्कल को लेती, इस सर्कल को कंसीडर करता हूं, दैट इज द सर्कल नंबर 2. सो दिस इज द सर्कल नंबर 1 वी हैव एंड दिस इज द सर्कल नंबर 2, राइट? सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2. तो ये सर्कल जो है फर्स्ट सर्कल, ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल जो है ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है बेटा, राइट? दिस बाइसेक्ट दिस सर्कल, राइट? तो अगर ये बाइसेक्ट करता है ना, इफ दिस इज बाइसेक्टिंग दिस सर्कल, ओके, तो व्हाट वी हैव द chord. तो लॉजिक इसका ये है कि तभी हो सकता है, ठीक है, द सर्कमफरेंस ऑफ द बाइसेक्ट करने के बाद क्या हो सकता है. तो इसमें जो बेसिक लॉजिक होता है वो होता है कि भाई ठीक है, ये जो हमारे पास है, जो मैंने कॉन्सेप्ट को बताया था कि ए बी जो है ना ये डायमीटर बन जाता है, ए बी आपका डायमीटर बन जाता है. अगर डायमीटर बन जाता है इसका मतलब दो सेंटर्स हो गए आपके पास. एक तो C1 हो गया बेटा, C1 इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज माइनस जी, दिस इज माइनस एफ, राइट? और एक आता है आपके पास C2. तो सेंटर 2 जो होता है ये होता है माइनस G dash, this is minus of F dash, ठीक है. दिस इज हाउ वी राइट इट. नाउ आप क्या करते हो, आपके पास एक सर्कल होता है S1 इज इक्वल टू 0, आपके पास सर्कल होता है S2 इज इक्वल टू 0. तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 विल गिव यू द कॉमन चॉर्ड, राइट? तो एक तो आपके पास ये आ जाता है बेटा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, तो एक कॉमन चॉर्ड आ जाता है, राइट? तो ये जो कॉमन चॉर्ड आता है इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, आप इस सर्कल को इस सर्कल से माइनस कर देते हो. सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द कॉमन चॉर्ड एंड वी हैव टू प्रूव दिस. तो ये मैंने कह दिया अभी, जो ए बी है ये डायमीटर होता है बेटा, ठीक है. ये सर्कमफरेंस को अगर बाइसेक्ट करता है तो दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर.
right? So that means we have S1 minus S2 is equal to 0. This is the step number 1 we have. Now once we have this, what we can write 2gx, let me subtract it, minus 2g dash x we have, plus 2fy, right? Then we have minus of 2f dash y, plus c minus c dash is equal to 0. Okay? अभी ये जो chord है, ये एक diameter है. So this is the diameter actually. So if it is diameter, it passes through the center of the second circle. So if it passes through the center of the second circle, suppose this is equation number 1. So 1 passes through what? 1 passes through, fine, 1 passes through what? Minus g dash minus f dash. So if it passes through minus g dash minus f dash, students, this will satisfy this equation. Once this is satisfied, this has been proved. Okay, if this is satisfied, then this will be proved. So this is the second concept जो हम discuss कर रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे questions बनते हैं, how the questions are framed. So this is the second in line, right? चलिए देखिए आप इसे, ये थर्ड क्वेश्चन हमने किया. ओके, नाउ ये तो आपका एक सवाल हो गया जो इस तरह से होता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गेम. ठीक है, वी हैव वन मोर. If the tangents are drawn to the circle, see, it's a very interesting problem. देखो, directly they are not asking the problem, you know. Directly formula use नहीं हो रहा. मतलब we have different types. Okay, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कॉमन कॉर्ड पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जैसे मैं आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू. So but in a different way, every question being framed, right? So what we have been given this circle, these two circles have been given to you. So basically we are talking about, you know, we have a circle like this. ठीक है, एक सर्कल आपके पास ये आ गया बेटा, है ना, और tangents being drawn to these circles at the points where it meets the circle. So that means again आपके पास एक सर्कल है जो कुछ ऐसा है बेटा. तो ये S1 अगर है तो ये आपका S2 है, राइट, ये 0 है. ठीक है, ऐसे. तो ऑब्वियसली एक सर्कल, अभी ये दे आर सेइंग दैट ओके at the point where the meets the circle. So basically we are talking about the tangents like this. This is the tangent I am talking about, right? ये आपका tangent है बेटा. These are the tangents we are talking about. And this is the common chord. This is the common chord, right? So we have to find the point of intersection. So basically we have to find the point of intersection of these two tangents. Okay. So this is tangent number 1 we have, and this is the tangent number 2. Right, so we have to find the point of intersection of these two tangents. तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारे पास पॉइंट है, मान लीजिए h, k है. So we have to get the values of h, k. Right, we have to get the values of h, k in this case. So how to find it out? So if we talk about this part, right, because we have a common chord in this case. ठीक है, तो common chord लेते हैं हम पहले. तो common chord क्या होता है बेटा? S1 minus S2 is equal to 0. So this is the step number 1. Right, this is step number 1. S1 minus S2 is equal to 0 is the common chord. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. It's a very interesting problem and a very common, you know, concept being used in different types of questions being asked in the examination. S1 minus S2 is equal to 0. So that means we have subtracted here. तो क्या क्या subtract हो सकता है बेटा? आप देख सकते हैं यहाँ पे, this is 5x, तो ये minus 3 हो गया, and then we have minus 12, that is minus 10 is equal to 0. Can you see that? I mean this is the line we have. कैसे हमने किया बेटा? Because हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे x square plus y square minus 12 is equal to 0 लिखते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम इसे subtract करते हैं. So this is x square plus y square, this is cancel, minus minus, you know, we have 5x, so 5x plus हो गया, plus 3y becomes minus 3y, right? Then we have this as minus 10. So minus 10 कैसा आया? Because minus 12 and minus minus 2 plus 2, that is minus 10. So this is the common chord we have. Now another thing is that this is one common chord, but how to find the point of intersection? So there is a catch now. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोनिक की बात करते हैं ना बेटा, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे ना chord of contact की बात करते हैं. एक कॉन्सेप्ट है chord of contact की. सपोज मेरे पास एक chord of contact ऐसा होता है, ये दो टेंजेंट्स है मेरे पास, मान लीजिए
this is the tangent 1 and tangent 2, and these are the point of contacts. So suppose it meets here h comma k. तो जो इक्वेशन होता है ना वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, तो दिस इज बेसिकली द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है. दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव, राइट. So if we talk about the chord of contact in this case, so this is nothing but we have t is equal to 0. मतलब जो equation of tangent होती है ना वही हमारी chord of contact होती है. तो this is valid for all the conics. We go for circle, we go for parabola, we go for hyperbola, we go for ellipse. तो हर जगह t is equal to 0 की हम बात करते हैं जब भी हम chord of contact की बात करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास ये सर्कल था, कौन सा सर्कल है बेटा, S1 is equal to 0, तो मेरे लिए ये AB जो है ना chord of contact हो गया. देखो स्टेप नंबर 2 पे अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, सो दिस आर द टू टेंजेंट्स एंड दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो कॉर्ड सर्कल कौन सी है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव दिस एज x1, दिस इज y1, राइट. तो हम क्या करते हैं बेटा, हम बात करते हैं यहाँ पे hx प्लस ky, दिस इज -12 इज इक्वल टू 0, राइट. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. और इन दोनों को क्या करते हैं, दिस बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग बेटा, राइट. सो इफ बोथ आर द सेम थिंग दैट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन्स, दैट मीन्स 5/h इज इक्वल टू -3/k इज इक्वल टू -10/12. तो इससे क्या होगा, आप h और k की वैल्यू निकाल लेते हो, फर्स्ट की रिलेशन, थर्ड की रेशियो और सेकंड थर्ड की रेशियो, ठीक है बेटा, राइट. और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6, -18/5. So this is the answer we are talking about बेटा, ठीक है. प्रतीक बेटा ये क्लास जेई की चल रही है, जो जेई के बच्चे हैं ना वो शायद अभी आए हो, तो जेई के बच्चों के लिए है जो अभी आपके जेई के एग्जाम दे रहे हैं. वहां पे मैं इसको शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने 4 अलग अलग तरह के सवाल बताएं, कैसे हम यूज करते हैं कॉमन कॉर्ड को, कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट्स मैंने 2 आपको बताए, ठीक है. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन कॉर्ड. सो यू नीड टू गो थ्रू इट. अगर एक बार आप इस सवालों को सॉल्व करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन, राइट. तो ये आज के लिए है बेटा. होपफुली थिंग्स आर क्लियर. सो विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा. टेक केयर.